गॉस लॉ। नहीं, एक मिनट रुको, इससे पहले लिखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डालो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इससे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आवाज जा रही है ना मेरी? बोलो। Yes, sir. Charge distribution. So there are three types of charge distribution. First one is linear charge distribution. Linear charge distribution. Okay, linear charge distribution, lambda. Second one is surface or area charge distribution. Sigma. And third one, volume charge distribution rho. ठीक है, अब एक एक हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज distribution. Okay, first we are going to discuss linear charge distribution. So what is linear charge distribution? What is linear charge distribution? है ना? Suppose whole charge, suppose just imagine you have q amount of charge. You have q amount of charge. Okay, and this charge is distributed. Okay, not at a point. ये charge किसी एक point पे नहीं. This q amount of charge is distributed. Okay, in a length, है ना? जैसे मान लेते हैं, just assume this is a rod. This is a rod of length L. This is a rod of length L. Suppose this is a rod of length L. Okay, and I have given this charge to this rod. So what will happen? This q amount of charge will be distributed in the rod as so. मतलब this q charge will not be stored at any point, like at this point, yeah, or at this point. This q amount of charge will be distributed in whole length of the rod. Okay, so if I ask you what is the charge per unit length, what is the charge per unit length? See, in L length, unitary method, we are going to apply unitary method. In L length, q amount of charge is there. So in 1 unit length, how much charge will be there? Q by L. Q by L. So this Q by L is known as linear charge density. Linear charge density. Okay, linear charge distribution या linear charge density भी कहते हैं इसको. Okay, तो अगर हमें define कर लिखेंगे when charge is distributed in a length, then it is known as linear charge distribution. Known as linear charge distribution. Then it is known as linear charge distribution. Okay, so suppose q amount of charge, it is denoted by lambda. Suppose if q amount of charge is distributed
q amount of charge is distributed in L length. Okay, then the linear charge density lambda will be equal to q by L. Okay, if I talk about SI unit of linear charge density, so SI unit of linear charge density will be coulomb per meter. Okay, coulomb per meter. Write it down. Suppose for example, suppose this is a rod. Okay, and I have given q charge to this rod, and this whole charge is distributed in this rod. Okay, write it down. हो गया Yes, sir. चलो next one is surface charge distribution. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सिग्मा। तो इसमें होता क्या है बच्चे, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई सीट है, सपोज ये कोई सीट है, किसी भी शेप में हो सकता है, कोई सीट है या कोई सपोज इस टाइप का सीट है, स्क्वायर टाइप का बड़ा लंबा सीट है, मतलब सिंपल जिसका कुछ एरिया है, ठीक है। हमने इसको क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज सपोज दिया, तो ये क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज किसी एक पॉइंट पे नहीं रह गया, ये पूरे इस एरिया में if I given q amount of suppose minus q charge to this area, to this seat, so this minus q charge is distributed in whole area. This minus q charge is distributed in whole area. Okay, not at a point. Okay, so suppose if area of the sheet is A, suppose area of the sheet is A and also area of this sheet is A, so what will I say here? लिखेंगे हम लोग q charge is distributed in area A.
in area A. Okay, so हम लोग we can say that in area A, in area A, in area A, Q amount of charge is distributed. Okay, Q amount of charge distributed in 1 unit area. Unitary method कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, Q by A. इसको हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिटरी मेथड वही, ठीक है, डेंसिटी. सो सिमिलरली हम देखते हैं यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि सरफेस लेकिन व्हेन Q amount of charge, Q amount of charge is distributed, Q amount of charge is distributed in an area A, then it is known as surface charge distribution. Surface charge distribution. Okay, surface charge distribution. Okay, so if Q amount of charge is distributed, Q amount of charge is distributed in area A, then surface charge density sigma will be equal to Q by A. Okay, sigma will be equal to Q by A. If I talk about SI unit, so SI unit of surface charge density will be equal to coulomb per meter square. Write it down. हो गया, हो गया. Yes, sir. चलो next, volume charge distribution. Third part, volume charge distribution. Volume charge distribution. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें होता क्या है, जैसे मान लो हमारे पास ये एक स्फेयर है, स्फेयर एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, या ये कोई सपोज सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, कोई सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, ठीक है. हमने इसको क्यू चार्ज दिया, क्यू चार्ज. ये सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, ये सॉलिड सिलेंडर है,
है ना, हमने इसको क्यू चार्ज दिया। तो स्फेयर है, इस स्फेयर का वॉल्यूम होता है और इस स्फेयर में ये क्यू चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसको हमने क्यू चार्ज दिया और ये क्यू चार्ज इस सिलेंडर के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरे के पूरे वॉल्यूम। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वॉल्यूम। ओके, so things are very easy. Linear charge distribution means charge is distributed in length only. Surface charge density means, या surface charge distribution means charge is distributed in a surface area. And volume charge distribution means charge is distributed in a volume. So suppose if in volume V, Q amount of charge is distributed. So in unit volume कितना आ जाएगा, Q by V. This Q by V is known as volume charge density. Volume charge density. So if I have to define, so I will write when Q amount of charge, when Q amount of charge is distributed, when Q amount of charge is distributed in a volume, then it is known as volume charge density. Volume charge density. Okay, so if Q amount of charge is distributed in volume V, then volume charge density, okay, volume charge density rho will be equal to Q by V. This is rho. Okay, this is rho. This one is rho. If I ask you unit, SI unit, so SI unit will be equal to coulomb per meter cube. Write it down.
हो गया? हो गया? Yes, sir. Okay. Let's solve some problem. Suppose question. I ask you uh, linear charge density. Linear charge density on a rod of 5 meter length is 10 coulomb per meter. Okay. Then 50 coulomb option C, 30 coulomb option D, none. चलो फटाफट बोलो, फटाफट. So 20 coulombs, sir. Yes, 20 coulomb. See, what is given? Linear charge density lambda is given. How much? 10 coulomb per meter. Okay. मतलब ये कोई रॉड है, length of this rod is 5 meter. Okay. And linear charge density is given. What is this lambda means? Means charge per unit length. Charge per unit length. You know, simple. Lambda linear charge density, charge per unit length. Per unit length. Remember it. Sigma charge per unit area. Unit area. And rho charge per unit volume is this. Per unit volume. Okay. So we have to calculate lambda is given 10 coulomb per meter. मतलब charge per unit length is given. यानी कि 1 unit length में charge कितना है? 10 coulomb. इस lambda का मतलब है 1 coulomb for 1 unit length में charge कितना है? 10 coulomb. We have to calculate in 2 meter length. तो 2 meter length में कितना जाएगा बोलो? lambda होता क्या है? Q by L. तो Q कितना जाएगा? lambda into L. Lambda is 10. कितने लेंथ में निकालना है? 2. तो 10 into 2 दिस विल बी 10 20 कूलम. सो सर अगर मैं यहाँ से बोलता टोटल चार्ज बताओ इस रॉड पे, इस रॉड पे टोटल चार्ज, तो क्या लिखते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू Sir, 50 coulombs, sir. तो Q इज इक्वल टू लैम्डा इनटू L. अब लैम्डा 10 है, रॉड का लेंथ कितना है? टोटल टोटल रॉड पे निकालना है, तो रॉड का पूरा लेंथ कितना है? 5. So this will become 50 coulomb. Okay. So in that case, option B will be correct. Write it down. Then we are moving to next question. हो गया? Yes, sir. चलो चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं. सपोज दिस इज अ रॉड. ऐसे नहीं. सपोज दिस इज अ रॉड. This is a rod.
linear charge density of this rod is lambda. Linear charge density of this rod is lambda. मैंने एक सपोज एक सिलेंडर बनाया ऐसे, इमेजिनरी सिलेंडर, एक इमेजिनरी सिलेंडर मैंने बनाया ऐसे ऐसे एल लेंथ का, कितने लेंथ का, एल लेंथ का, ओके। देन चार्ज इनसाइड imaginary cylinder will be, चलो बोलो फटाफट। ऑप्शन ए लैम्डा एल, ऑप्शन बी टोटल रॉड का लेंथ है, रॉड का टोटल लेंथ है कैपिटल एल, ठीक है, लैम्डा इंटू कैपिटल एल। ऑप्शन सी नन। चलो बोलो फटाफट, बोलो बोलो। सर ऑप्शन बी। नो, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए होगा भाई। हमसे क्या पूरा, चार्ज इनसाइड इमेजिनरी सिलेंडर। तो इमेजिनरी सिलेंडर आपका कितने लेंथ का है भाई, जितना लेंथ रॉड का इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर होगा उतना ही चार्ज होगा। तो एल लेंथ का इमेजिनरी सिलेंडर है, मतलब क्या, दैट मीन्स कि एल लेंथ इस रॉड का इस सिलेंडर के अंदर होगा, स्मॉल एल लेंथ इतना पोर्शन है ना, इतना पोर्शन। तो इतना जब इसके अंदर है तो इतने में कितना चार्ज होगा, बोलो। लैम्डा क्या होता है, क्यू बाई एल, है ना, क्यू बाई एल। तो यहाँ से क्यू कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल। भाई इतना ही पार्ट तो अंदर है सिलेंडर के, इतना ही पार्ट तो अंदर, बाकी इतना तो बाहर है, इधर से इतना बाहर है, तो वो तो सिलेंडर के अंदर आएगा ही नहीं। तो सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज यस सर। जाएगा, लैम्डा इंटू एल, ठीक है, नोट करते जाओ। हो गया, हो गया, चल यस सर। चल नेक्स्ट राइट डाउन गॉस लॉ। गॉस लॉ, गॉस लॉ, राइट डाउन गॉस लॉ। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लिखो गॉस लॉ, लिखो पहला गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स coming out, coming out, no, electric flux, sorry, coming out nahi, electric flux through any closed surface, through any closed surface, underline the word closed surface, closed surface. According to Gauss law, electric flux through any closed surface will be Q enclosed
q enclosed by epsilon naught. Okay, where q enclosed is the net charge enclosed by the surface, enclosed by the surface, okay, by the surface. That means suppose this is a closed surface, this is a closed, any closed surface, it has charge q enclosed. It has charge q enclosed. This is a Gaussian surface, and remember Gaussian surface will always be a closed surface. ठीक है, नोट कर लेंगे, always be a closed surface. Okay, so flux coming out through this surface, electric flux coming out through this surface, phi will be equal to q enclosed, yeah, by epsilon naught, where q, what is q enclosed, surface, what is q So the net charge enclosed by q enclosed is net charge inside the Gaussian surface, net charge inside the Gaussian surface. Okay, so we can write it phi is equal to integral e dot da, sorry, e dot da, okay, is equal to q enclosed by epsilon naught. This is the गॉस लॉ. ये स्टेटमेंट लिखने के लिए और ये पूरा फार्मूला लिखने के लिए 2 मार्क्स में पूछता है. तो राइट इट डाउन एवरीथिंग व्हिच इज written on board. हो गया. Yes, sir. हो गया. Yes, sir. अच्छा, चलो एग्जांपल से समझते हैं. एग्जांपल, सपोज दिस इज अ गॉसियन सरफेस. ठीक है, दिस इज अ गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस कैसा होगा? क्लोज सरफेस होगा. कैसा होगा?
क्लोज्ड सरफेस होगा, ठीक है, ओपन नहीं, क्लोज सरफेस। एक चार्ज हमने यहाँ रख दिया सपोज Q1 और एक चार्ज यहाँ पे रख दिया Q2। अच्छा इसको छोड़ो, अभी बेसिक से समझते हैं, चलते हैं। एक चार्ज यहाँ बाहर हमने रख दिया Q2। मैंने पूछा पहला फ्लक्स बताओ थ्रू द गॉसियन सरफेस, तो फ्लक्स कितना होगा बोलो। हम लोग क्या लिखेंगे, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड by epsilon naught. बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है बोलो, कितना चार्ज So गॉसियन Q1. सरफेस, तो फ्लक्स होगा सिर्फ Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्योंकि सिर्फ Q1 इस गॉसियन सरफेस के अंदर, Q2 तो बाहर है, तो Q2 कोई फ्लक्स नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ओनली Q1 will contribute in flux through Gaussian surface. Gaussian surface. दूसरा पॉइंट, Q2 will not contribute in flux because it is outside the Gaussian surface. Gaussian surface. तो जो चार्ज, only those charge will contribute in flux which will be inside the Gaussian surface. Okay, so an important point bold में करके लिख लें, only those charges will contribute, है ना, only those charges will contribute in flux which will be inside the surface, inside the Gaussian surface, Okay, write it down, then we are going to solve some more problem, because from this concept only questions come. हो गया, नोट कर लिया, बोलो। Yes. चलो
Next question. Plus 2q minus 3q and plus 8q. Leave it. Then calculate flux through the surface. Option A, 2q by epsilon naught. Option B, minus 3q by epsilon naught. Option C, minus q by epsilon naught. Option D. चलो Sir, option C. This C. Q enclosed. How much Q enclosed will be? So plus 2q plus of minus 3q. This will be minus q. So flux, what will Yes, be sir. flux? Q enclosed by epsilon naught. So Q enclosed is minus q by epsilon naught. So flux phi will be equal to q by minus q by epsilon naught. Option C1 correct. Write it down. Write it down, then we are moving to the next problem. हो गया? हो गया? बोलो भाई, बोलो 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 बोलो. हो गया? Yes, sir. चलो. Next question. This is surface 1 and this is surface 2. Okay. Charges are, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस 2q, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस 5q, यहाँ पे एक चार्ज है माइनस 2q, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस 7q और यहाँ पे एक चार्ज है माइनस 8q. मेरा पहला क्वेश्चन फ्लक्स थ्रू सरफेस S1, फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 है ना, रेड वाला. चलो फटाफट. ऑप्शन ए 2q by epsilon naught. Option B 7q by epsilon naught. Option C 12q by epsilon naught. Option D none. चलो बोलो फटाफट. सर दो बॉडी अलग अलग है. दो सरफेस. बॉडी नो सरफेस.
हुआ? सर 12 by epsilon naught सर। नो, सी सर नहीं आ रहा। हमको किससे कैलकुलेट करना है? फ्लक्स थ्रू सरफेस वन. व्हिच वन इज सरफेस वन? दिस रेड वन. This red यस one. सर। So you will just see charge enclosed by red one. So how much charge is enclosed by this red one? अब आप सर सिर्फ इस प्लस पे 7 फोकस क्यू। करोगे, कितना होगा? 7 क्यू. बस प्लस प्लस 7 सेवन क्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. ये तो इस रेड के बाहर है ना, ये भी इस रेड के बाहर है, ये भी इस रेड के बाहर है, तो उसको क्यों इंक्लूड करेंगे? सिंपल. फ्लक्स क्या होता है? क्यू इनक्लोज्ड, दैट्स इट. अब हमने सरफेस यस S1 सर। बोला, ये सरफेस बोला, तो आप सिर्फ रेड वाले के देखोगे, रेड वाले के अंदर कितने चार्ज है, बस खत्म. फिर देखो, अगर सिमिलरली अगर मैं दूसरा पूछूं, फ्लक्स थ्रू सरफेस S2, तो फ्लक्स थ्रू सरफेस S2 मतलब अब ब्लैक वाला सरफेस S2 है, तो इस ब्लैक वाले के अंदर कितना चार्ज है, आप बस उसको देखोगे. ब्लैक वाला, ब्लैक वाला, ये ब्लैक सर वाला. 10 by epsilon naught। ब्लैक वाला तो कितना आ जाएगा? ब्लैक वाले के अंदर टोटल कितना चार्ज इंक्लोज है? ये 5 भी ब्लैक वाले के अंदर है, तो प्लस फाइव यस सर। क्यू. ये 7 क्यू भी अंदर है, +7 क्यू. और ये -2 भी अंदर है, तो -2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 10 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. नोट करो. चलो, नेक्स्ट राइट डाउन. नेक्स्ट राइट डाउन. देखो, हाउ टू चूज, हाउ टू चूज Gaussian surface, Gaussian surface while calculating इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो देखो, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स फाई होता क्या है? क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट. फ्लक्स फाई को हम लोग ये भी लिखते हैं इंटीग्रल क्लोज सरफेस के लिए, ई डॉट डी ए, याद करो क्लोज सरफेस के लिए, है ना. तो इन दो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना.
या इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अगर ई कांस्टेंट हो, ई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट करते टाइम ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करेंगे कि जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम। ओके, तो लिखें ऑलवेज चूज गॉसियन सरफेस, always choose Gaussian surface in such a way that magnitude of electric field, magnitude of electric field at each and every point, at each and every point of Gaussian surface, direction अलग हो सकता है but magnitude point of Gaussian surface remains same, Gaussian surface remain same। अगर ऐसा हम लोग करेंगे, है ना, तो होगा क्या, ई कांस्टेंट हो जाएगा। तो ई जब कांस्टेंट हो जाएगा तो इंटीग्रेशन लिमिट से बाहर आ जाएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन लिमिट से बाहर आ जाएगा तो आपका सिर्फ यस डी ए सर। कॉस थीटा बचेगा, और इसको हम लोग आसानी से इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमेशा ऐसा ही गॉसियन सरफेस चूज करना है कि उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या रहे, सेम रहे। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है बट मैग्नीट्यूड of electric field at each and every point of that Gaussian surface will be should be same, ठीक है। इससे आपको आसानी, ऐसा नहीं है कि अगर सेम नहीं होगा तो हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, we can calculate but we this can this that process will be very tough। So to ease the process, to make it easy, we will choose a Gaussian surface in such a way that the magnitude of electric field at each and every point of the Gaussian surface will remain same। Note it down, then we are going to some derivation। हो गया, चलो नेक्स्ट डालो। नेक्स्ट डालो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यहाँ पे सपोज कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q, इससे R डिस्टेंस पे
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल चुके हैं, कितना आया है के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे के क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना। सो this derivation we are going to do with by using Gauss law. So see how we will do it. See, this is a point charge, this is a point charge plus q suppose, and this is point r. At this point we have to find electric field. So our first step will be choose Gaussian surface. Choose Gaussian surface. First step will be choose Gaussian surface. So how we will choose Gaussian surface? The Gaussian surface will be such that the electric field intensity, magnitude of electric field at each and every point should be same. So imagine a sphere. I imagine a sphere of radius small r and charge q is at its center. Okay. So अब देखो, अगर हम लोग एक स्फेयर चूज करते हैं, ये एक स्फेयर है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ओके, सो इसके हर पॉइंट, इसका देखो, इस गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट r डिस्टेंस पे होगा, स्फेयर है और चार्ज सेंटर पे है, तो चार्ज से हर पॉइंट इस गॉसियन सरफेस का r डिस्टेंस पे होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, की मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस गॉसियन सरफेस विल बी सेम. ओके, सो we have chosen Gaussian surface. What will be the step 2? Step 2 is flux is equal to q enclosed by epsilon naught. Okay, so first step we are choosing Gaussian surface. Second step we are going to apply flux through this Gaussian surface. So what is the flux through this Gaussian surface? कितना चार्ज है इसके अंदर? सिर्फ q चार्ज है, तो q by epsilon naught. We can write flux phi is equal to EdA. Okay, is equal to q by epsilon naught. तो फ्लक्स फाई को हम लोग suppose at this point area vector will be outward, direction of area vector will be outward, and direction of electric field will also be in this direction. So theta is here 0, theta is here 0, so we can write EdA cos 0, that will be equal to q by epsilon naught. Okay, so this will become EdA, value of cos 0 is 1, so EdA will be equal to q by epsilon naught. Now electric field is electric field, and this electric field is constant. Magnitude of electric field, magnitude of electric field, Yes, sir. and this magnitude at each and every point of this Gaussian surface is constant. At this point kq by r square, at this point kq by r square, at this point kq by r square, because distance is r, distance is r. At this point distance is r, electric field kq by r square, at this point kq by r square. Okay, so this will come out of the integration limit, so this will become E integral dA will be equal to q by epsilon naught. What will be the integral dA? Surface area of this sphere. So what is the surface area of this sphere? What will be the surface area of a sphere of radius r? 4 pi r square. So Yes, E sir. into 4 pi. Sir. 4 pi r square will be equal to q by epsilon naught. Okay, yeah, E will be equal to 1/4 pi r square into q by epsilon naught, or E will be equal to, we can write it 1/4 pi epsilon naught into q by r square.
So 4 This is pi the pi. So 4 pi r square with a constant again. हाँ, so 1/4 pi epsilon naught क्या होता है? K होता है ना? This is K, so we can write it K. So this will be equal to K Q by R square. This is the proof. 3 marks. Write it down. Everything whatever is written in board. हो गया? हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चल, next derivation. नेक्स्ट डेरिवेशन लिखो. नेक्स्ट डेरिवेशन, ये सारे डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinite or very long thin wire using Gauss law. Using Gauss law. Suppose this is a wire. Suppose this is a wire, very long wire. Okay, this is a very long wire. काफी लंबा वायर है. This is a very long wire. Okay, this is a very long wire. And linear charge, this is a wire, that means it has only length, so linear charge density is lambda. Linear charge density is lambda. Okay, lambda. Lambda क्या है? Linear charge density. We have talked about it, so we don't have any problem. Okay, at distance r from this rod, at this point, at distance r, we have to calculate electric field. We have to calculate intensity of electric field. So what will be our first step?
What will be your first step? Choose Gaussian surface. Choose Gaussian surface. So rod charge is distributed in length this time. So in this case, we choose a cylinder. Gaussian surface will be in form of cylinder. Gaussian surface will be in form of cylinder. Okay. And this rod is at the axis of cylinder. So imagine in 3D, you have a cylinder and the rod is at the axis of the cylinder. So the surface, the curved surface of cylinder will be at the curved surface of cylinder will be at a distance of r from the rod, and each and every point of that curved surface will be at distance r. So distance will be same, so magnitude of electric field at each and every point of the curved surface of cylinder will be same. So let's apply. First portion is completed. Choose Gaussian surface. You have to remember it, right? Second, write flux phi is equal to q in by q enclosed by epsilon naught. Suppose length of this cylinder is L, just suppose. So tell me how much charge will be this Gaussian surface? Q enclosed, how much will be Q enclosed in this cylinder? Lambda into L. Yes or no? Any problem in this step? Any No, problem in this step? Any problem in this step? Any problem in this step? अरे लैम्डा क्या होता है? Q by L ना, तो Q कितना आ जाएगा? लैम्डा into L इस सिलेंडर के अंदर. So flux phi will be equal to lambda into L by epsilon naught. See how much surface, how many surface this cylinder have? This surface, and one closed surface. So curved surface. So how many surface are total there? 3 surface. Bolo yes or no? So yes, sir. in this surface, area vector will be upward, outward hota hai, electric field will be in this direction, angle is 90 degree, so flux through this surface Flux will be 0. zero. Similarly, area vector will be in this direction, electric field will be in this direction, angle 90 degree, so Flux flux will be through this 0. surface will be zero. So flux किसकी वजह से होगा? सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस की वजह Curved से. surface. सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस. हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से आगे आके फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट dA is equal to lambda L by epsilon naught. अब इंटीग्रल E डॉट dA को हम लोग ले सकते हैं. E dA cos थीटा is equal to lambda L by epsilon. तो हम लोग क्या लिखेंगे? इंटीग्रल E dA cos 0 is equal to lambda L by epsilon naught. So E is constant. This E is constant. Yes, sir. So this will come outside. So integral dA will be equal to lambda L by epsilon. So what is this dA? Curved part का surface area. So what is the surface Yes, area of curved part of cylinder? 2 so 2 pi RL. pi RL. 2 pi RL. So E into 2 pi RL is equal to lambda L by epsilon naught. L से L to L will get cancel out. So E will be equal to lambda upon 2 pi epsilon naught into R. This will be the answer. Write it down first, then I have to explain some more new point. Write it down first.
Okay. So see, electric field. See, electric field E comes lambda upon 2 pi epsilon naught into R. So see this one is constant, lambda is constant, 2 pi is constant, and epsilon naught is constant. So from here we can say E is indirectly proportional to R. Okay, so if we will draw graph, this is distance R, this is electric field. So E is indirectly proportional to R, so graph will be like this. Graph will be like this. That means this is rod, this is infinite rod, okay, of charge density lambda. If R will be 0 at very close to rod, then electric field will be infinite. Graph is going upward. Okay. And if R will be infinity, then very distance, then electric field will become 0. तो ये 0 की तरफ जा रहा है. Note it down. Okay. Yes, sir. Okay. So write it down and revise it. In next class, this chapter will be finished. Okay. So we will meet in next class. Okay, sir. और होमवर्क जो दिया हुआ उसको करते रहो. Yes, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Okay. Bye. Thank you, sir. Thank you. Sir.